Hello students, I am come back. Yesterday I discussed how unbalanced chemical equation is balanced. Today I discuss the types of chemical reactions. Types of chemical reactions. Chemical reactions are following types. Number first combination reaction, number second decomposition reaction, number third displacement reaction, number four double displacement reaction, number fifth is the oxidation reduction reaction. Number first combination reaction. Combination reaction are those reactions in which two or more substances are combined and to form a single compound is called the combination reaction. For example, that is a compound and that is a B compound. When the A and B compound is combined and to form a single compound, that is the combination reaction. For example, A compound and B compound are combined and to form a AB compound. AB is a single compound, that is a combination reaction. Other example of the combination reaction is when the quicklime is react in water and to form a select line CaOH coupled twice. That is a quicklime and CaOH coupled twice, that is a select line. Quicklime is calcium oxide and CaOH coupled twice, that means the calcium hydroxide. कोई भी रिएक्शन जब दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. Number 2. Other example of the combination reaction is the burning of magnesium. Mg plus O2 change to 2MgO. Burning of carbon C plus O2 change to CO2. Number 2. Decomposition reaction are those reactions in which a single compound is decomposed into two or more compounds, that is the decomposition reaction. For example, it is a single compound and when it is split into two or more compounds, that is the decomposition reaction. That means कोई single compound जब दो और दो से अधिक कंपाउंड्स में नए दो और दो से अधिक कंपाउंड बनाता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर थ्री टाइप्स. डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर थ्री टाइप्स. नंबर फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Second is electrolytic decomposition reaction. And number third is photo decomposition reaction. First, thermal decomposition reaction. The decomposition reaction in which is a single compound is decomposed into two or more compounds by heating is called the thermal decomposition reaction. That means when the calcium carbonate is heated, calcium carbonate compound is decomposed into calcium oxide and CO2 gas. So a single compound is split into two or more compounds, that is the decomposition reaction. Because this reaction will happen by the heating, so this reaction is the thermal decomposition reaction. Other is when the ferrous sulfate is heated and it changes to the Fe2O3 plus SO2 plus SO3 sulfur dioxide gas. These gases are decomposed by the heating, so this reaction is the thermal decomposition reaction.
Second type is the electrolytic decomposition reaction. Electrolytic decomposition reaction are the decomposition reaction which are split into two or more compounds by passing the electricity in the aqueous solution. It's called the electrolytic decomposition reaction. For example, when the electricity passes in the water, that process is electrolysis process. Electrolytic decomposition reaction is also called the electrolysis reactions. And this water molecule is split into two compounds, hydrogen gases and oxygen gases. That is the electrolytic decomposition reaction. Now, photo decomposition reaction. Photo decomposition reaction is the decomposition reaction in which the two or more compounds are split in by the light. Is called the photo decomposition reaction. For example, when the silver chloride solution is absorb the sunlight, silver chloride is decomposed into two silver, 2Ag plus Cl2 gases, and also to AgBr compound, sunlight is decomposed to 2Ag plus Cl2. Now, number third, displacement reaction. Displacement reaction are those reactions in which a more reactive metal is displaced the less reactive metal in the aqueous solution. Is called the displacement reaction. For example, when the iron is react with the copper sulfate solution is solid and it is formed the ferrous sulfate solution plus copper solid. Copper sulfate is a blue solution. When the iron is react in the copper sulfate, then the colors are changes and the pale green color is formed. Pale green color solution, because the ferrous sulfate solution is pale green color. How can we say that this reaction is more reactive and this metal is less reactive metals? इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम किसी भी रिएक्शंस को हम बता पाएंगे कि वो किस तरीके से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है. फॉर एग्जांपल, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले क्या होगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद जिंक, Fe and Pb, and hydrogen, copper, silver and Au. मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बना रहा हूं मैं. ये पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल. और Au और प्लेटिनियम सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल. और रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. जब तक हमको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगी तब तक हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते. मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम. तो अब देखिएगा,
मैग्नीशियम की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से कराएं तो मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है, क्योंकि सोडियम ऊपर है तो मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। लेकिन सोडियम की रिएक्शन मैग्नीशियम सल्फेट से करा रहे हैं तो रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल है और हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। इसी का एग्जांपल हम यहाँ देखें तो ये जो आयरन है, यहाँ आप देखें Fe ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो Fe एंड कॉपर, तो Fe का पोजीशन ऊपर है, मीन्स हाई रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देगी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को, इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ Fe क्या है हमारा? मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल। अब ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है ये लेस रिएक्टिव मेटल है कॉपर, इसलिए इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से इसको आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगी और कॉपर को अलग कर देगी। तो इस तरीके से, और ये खुद सल्फेट के साथ Fe जुड़ जाएगी तो फेरस सल्फेट बन गया प्लस कॉपर बन गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से हम और भी रिएक्शंस को हम समझ सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का देख लें, मैग्नीशियम की मैग्नीशियम प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? NgSO4 प्लस Cu। यहाँ मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव मेटल है, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी यहाँ से और कॉपर यहाँ से हट जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक नंबर 4 रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement, those reaction in which two or more substances are react and the ions are exchanges, that is the double displacement reaction. Again, the reaction in which two or more substances are combined and ions are exchanges, that is the double displacement reaction. For example, barium chloride. When the barium chloride solution, aqueous solution, is react with the sodium sulfate solution, Na2SO4 solution, and to form the Ba, अब देखिएगा बेरियम सल्फेट है, Ba पे 2 पॉजिटिव आयन, 2Cl पे नेगेटिव आयन, एंड सोडियम सल्फेट है तो Na पे 2 Na पे पॉजिटिव आयन एंड SO4 पे 2 नेगेटिव आयन। तो इसके आयन इसके साथ एक्सचेंज हो जाएंगे और ये आयन इधर आ जाएंगे, मतलब ये वाला आयन आपके इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आयन क्या होगा? इस वाले Cl के साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ आयनों का एक्सचेंज हो रहा है और ये कंपाउंड क्या बनाएगा कि BaSO4, Ba ने SO4 के इसके आयंस के साथ चेंज किया तो बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन बना का सॉलिड प्लस 2NaCl सॉल्यूशन बना एक्वस सॉल्यूशन। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट को PPT से शो करते हैं। ये किसका है? बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट आता है, यहाँ आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, अब इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद नंबर 5 आती है हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। Redox reaction are those reaction in which the oxidation and reductions are both happen is called the oxidation reduction reaction. That means redox reaction वो reaction कहलाती है जिसमें oxidation भी हो रहा हो साथ साथ में reduction भी हो रहा हो, उसे हम oxidation reduction reaction कहते हैं। कल हम आपको oxidation reduction reactions आपको बताएंगे। इसलिए आज जितनी भी reactions हैं तो वो सारी रिएक्शंस को आपको तैयार करना है
एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस तैयार करने, यही आपके लिए होमवर्क है। ओके ओके, थैंक यू।